हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JPSC फॉर यू। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था मुंडा एंड नागवंशी किंगडम के बारे में, कैसे सेटल हुआ, हु आर द लीडर्स, व्हाट आर द एरियाज, कैपिटल। सो आज हम पेपर 1 के बारे में देखेंगे, पेपर 1, और हम शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी से, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। तो इसका पहला चैप्टर है द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें हम घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू करेंगे, क्योंकि बुक्स के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और घटना चक्र में जो क्वेश्चंस है वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है, यह सारे क्वेश्चंस है वो किसी ना किसी स्टेट PCS में पूछे गए हैं। और जो पेपर 1 के पेपर रहते हैं वो ऑलमोस्ट इससे मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो इससे भी कवर अप करेंगे तो अच्छा खासा पोर्शन और अच्छे तरीके से कवर अप हो जाएगा। So without wasting any time, let's start with the first chapter, the Constitutional Development of India. The first question is, which act of British Parliament abolished the East India Company monopoly over trade in India? Option A, Regulating Act. Option B, Pitt's India Act. Option C, Charter Act of 1813. Option D, none of the above. तो इसका करेक्शन ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 क्या किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी से जो ट्रेड का मोनोपोली था वो छीन लिया था। हालांकि उसका जो टर्म्स एंड ये था, क्या बोलते हैं, टर्म्स था बिजनेस करने का, उसको 20 साल के लिए बढ़ाया था, बट मोनोपोली ख़त्म कर दिया था। अर्लियर क्या था, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में ट्रेड कर सकती थी, न अब ऐसा नहीं था। अब इट्स ओपन फॉर ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। Now next question, by which of the following act Legislative Council of India received the power to discuss the budget? Option 1, Indian Council Act 1861, Indian Council Act 1892, Indian Council Act 1909 and Indian Council Act 1919। इसका करेक्ट आंसर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, सॉरी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो 1892 में दो चीज़ें हुई थी। पहला जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का सीट्स था वो बढ़ा दिया गया था एंड द मेंबर्स वेर, और सेकंड का था कि पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एडरेस द क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव, मतलब बजट को डिस्कस करने का अथॉरिटी मिला था। सो ये इसमें भी ये लिखा है, यू कैन गो थ्रू इट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, बट उसमें आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का प्रोविज़न नहीं था, वो अथॉरिटी नहीं मिला था, एंड यू हैव टू गिव अ 6 days नोटिस बिफोर आस्किंग एनी क्वेश्चंस ऑन द बजट। The third question is, in which of the following acts the provision was made for the establishing of Supreme Court at Calcutta? So important question है, it's Regulating Act of 1773। In the Regulating Act of 1773 सुप्रीम कोर्ट बना था कलकत्ता में, जिसके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे सर एलिजा इम्पे। यहाँ पे लिखा। By which, next question रहता है क्वेश्चन नंबर 4, by which one of the following acts was the federal court in India and created? फेडरल कोर्ट मतलब आज का हाई कोर्ट आप बोल सकते हैं। तो इट वाज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो ऑप्शन 2 would be the correct answer. The federal court in India was established by the government of India Act 1935 on 1st October 1937. Sir Maurice Gower was its first chief justice. So जो कि उन ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन सही नहीं है, पर इट्स ऑप्शन 1935। द फेडरल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? सेम क्वेश्चन 1937। Now match the following, match list with match list 2. Question number 6, establishment of board of control, establishment of Supreme Court, permission of English missionaries to work in India, and appointment of law member in Governor General Council. So establishment of board of control, Pitt's India Act 1784. Establishment of Supreme Court is Regulating Act 1773. Permission of English missionaries to work in India, Charter Act 1813, and appointment of law member in Governor General Council is Charter Act 1833. So यहाँ पर ये आंसर देख सकते हैं। Let's go next question. In the context of Indian history, the principle of
डियार्की रेफर्स टू, डियार्की मतलब द्विशासन, डुअल गवर्नमेंट। सो फर्स्ट उसका मतलब क्या है, तो वही पूछा इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट ऑप्शन इज डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू टू हाउसेस, introduction of double government, that is central and state government, having two sets of rulers, one in London, another in Delhi, division of the subjects delegated to the provinces into two categories. So correct answer would be answer D. इसमें क्या होता था कि जो पावर्स रहते थे वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता था। जो इम्पोर्टेंट रहते थे जैसे जेल, पुलिस, फाइनेंस, जस्टिस, ये were directly governed, administered by the governor and his executive council. इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जाता था। और जो लेसर इंपॉर्टेंट के सब्जेक्ट रहते थे लाइक एजुकेशन, जिससे अंग्रेजों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो ग्रो करे नहीं करे, उनको क्या अपना टैक्स से ही मतलब होता था। लाइक एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लोकल सब गवर्नमेंट were administered by governor with the aid of ministers responsible to the legislative council. लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मिनिस्टर्स चुने जाते थे ये उनके मदद से ये चीज़ें गवर्न होती थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल। ये सेंट्रल लेवल पूछ, अगर स्टेट लेवल पूछ मतलब प्रोविंस लेवल पूछेगा तो 1919 इज़ द करेक्ट आंसर, बट सेंट्रल लेवल पूछ रहा है तो 1935 इज़ द करेक्ट आंसर। तो 1935 में और भी बहुत कुछ हुए थे, वो कुछ पॉइंट्स में आप देख लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे बुलेट पॉइंट्स याद होने चाहिए, याद रहने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इनसे ही बनता है। अगर 1935 के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देखते हैं क्या है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज ओरिजिनली पास्ड इन अगस्त 1935। सैलिएंट फीचर्स ऑफ द एक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट है डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंट्रल लेवल इंस्टेड ऑफ प्रोविंस एज envisaged in the Act of 1919। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, ये पूछता है 1990 में किस पे हुआ था, 1935 में किस पे हुआ था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 proposed to set up all India Federation comprising of British India provinces and princely states. The supremacy of British Parliament remained intact under the Government of India Act 1935. Burma was separated from India with effect from April 1937. The Government of India Act 1935 abolished the Council of Secretary of State for India, which was created in 1858. ये एक स्पेशल पोस्ट बनाया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जैसे तो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे और एक वाइसरॉय, इसको फिर इस एक्ट के थ्रू एबॉलिश कर दिया गया। The Federal Court of India was established on 1st October 1937. Sir Maurice Gore was his first Chief Justice. The Central Federal Bank was established under this act, which were later known as Reserve Bank of India. So all these points are very, very, very important. Now moving on to the next question, question number 9. Which of the following acts set up diarchy system at the central level? Again the same question, it will be Government of India Act 1935. The Act of 1909 was associated with introduction of separate electorate, decentralization, diarchy, legislative council. So ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट था 1909 का, जब इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ था। और कहा जाता है कि दिस शोज द सीट्स ऑफ द डिवीजन ऑफ द कंट्री बाय डिवाइडिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। The Indian Council Act of 1909 introduced the separate electorate for Muslim community and thus was a seat of separation that eventually led to the partition of the country. Now next question 11. Which of the following are the principal features of the Government of India Act 1919? The introduction of diarchy in the executive government of the provinces. तो ये सही है। The introduction of separate communal electorate for Muslims, ये देखा हमने 1919 नहीं है, 1909 में है। Devolution of legislative authority by the center to the provinces, तो ये भी सही है। तो आंसर इसका 1 and 3 होना चाहिए। यस आंसर इज सी 1 and 3। सेम थिंग है
और वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का बोला था कि जैसे मॉन्टेगू चेम्स फॉर रिफॉर्म जो था 1990 के, उसमें मॉन्टेगू वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड वाइसरॉय वाज लॉर्ड चेम्सफोर्ड। फिर बाद में 1935 में इस पोस्ट को हटा दिया गया। सेम चीज़ इसमें भी लिखा हुआ है। Moving on to the next question, which of the following act introduced the principle of constitutional autocracy? Important question है। The Government of India Act 1935. The principle of constitutional autocracy was introduced by the Government of India Act 1935. This act vested the executive authority of provinces in the governors and of the central in the Governor General on the behalf of Crown. So Crown की तरफ से जो अथॉरिटी था प्रोविंसेस का, उसको गवर्नर के हाथ में दिया और सेंटर का गवर्नर जनरल के हाथ में दिया। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। Now question number 13. The Indian legislature was made bicameral for the first time by, जैसा अभी हमने देखा, for the first time, ऑप्शन नंबर ए इंडियन काउंसिल ऑफ 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये हुआ था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जबकि प्रोविंसेस को बाइकामेरल बनाया था। The Government of India Act 1919 made Indian legislature bicameral for the first time. It was to consist of an upper house named the Council of State and a lower house named the Legislative Assembly. Council of State was composed of 60 members, of whom 34 were elected, and the Legislative Assembly was composed of 114 members, of whom 104 were elected. So ये figures भी important है, एक बार याद रखेंगे। Question number 14. Which of the following act introduced bicameral legislature at the center? तो ये क्वेश्चन में एट द सेंटर है या एट द प्रोविंसेस है, बहुत केयरफुली देखेंगे। तो ये सेंटर है, तो इसका आंसर आपको पता है। फिर भी ऑप्शंस देखते हैं। 1916 एक्ट, 1917 एक्ट, 1919 एक्ट एंड 1915 एक्ट। एक्चुअली यहाँ पे आंसर दिया सी, बट दैट वुड बी रॉन्ग, क्योंकि 1990 में वो प्रोविंसेस में हुआ था, सेंटर में 1935 में हुआ था। सो इनमें से कोई नहीं आंसर होना चाहिए, ध्यान रखेंगे चीज़ का। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज अ रिलीक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो हम जैसे कि देखते हैं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसमें जो मेन पार्ट था, बहुत बड़ा हिस्सा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था, जो उसके अच्छे पॉइंट्स बोल सकता है। तो दैट वाज द बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये भी हमारा 1935 से ही आया है। Though in British India, Government General was empowered to promulgate ordinance without the permission of Legislative Council under the Indian Council Act 1861. However, the President's power to promulgate ordinance is inspired by the Section 42 of the Government of India Act 1935. Now, moving on to the next question. Which act for the first time made it possible for Indians to take some share in the administration of their country? Charter Act 1833, Charter Act 1853, Government of India Act 1858 and Indian Council Act 1861. इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। Section 87 was one of the most important sections of the Charter Act 1833. It stated that no person of India or the Crown would be debarred from any place, post or service subject to the company on the ground of religion, place of birth, descent or color, or any of them. Subsequent Section 87 of the Act 1833 laid the foundation for the participation of Indians in the administration during the political movement. So it was a milestone act, आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट टाइम इंडियंस को भी की भी हिस्सेदारी इस एक्ट के थ्रू पॉसिबल हुई थी।
सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the distribution of power between center and state as in the Constitution of India is based on which of the following? Same. Government of India Act 1935. C will be the correct answer. The separation of power was made by the Government of India Act 1935. It divided the legislative powers between center and the provincial legislature and placed hierarchy in the provinces with hierarchy at the center. The act also envisaged establishment of Federation of India made up of both British India and some of princely states. फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाया था ब्रिटिश इंडिया के में जो आते थे और प्रिंसली स्टेट जैसे सतारा, झांसी, these were the some of the princely states. However, this part was never implemented. A federal system and a hierarchy at the center was introduced in India by same question Act of 1935. Question number 19. The provision for the establishment of All India Federation was included in the same the Government of India Act 1935. Question 20. Which one of the following acts provided for a federal polity in India? The Government of India Act 1935. These are the same questions, so ज़्यादा डिस्कस करने का मतलब नहीं है. In the federation established under the Act 1935, residuary powers were given to the Governor General. Important है. The residual powers were given to the Governor General in the federation established under the Government of India Act 1935. Now, which one of the following is not an important and permanent constitution in the constitutional history of India as adopted in the Government of India Act 1935? Option A, a written constitution for the country, elected representative responsible to the legislature, envisaging a scheme of federation, nomination of official members in the legislature. Correct answer is option number A. Provision for a written constitution for the country were not in the Government of India Act 1935. It was mentioned for the first time during Cripps mission. The rest all the provisions were included in the Government of India Act 1935. तो जैसा कि बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर पार्ट्स हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया था, बट ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बट वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से नहीं लिया गया. क्वेश्चन नंबर 23. Who among the following was not a one among the following was not a salient feature of the Government of India Act 1935. तो जो बुलेट पॉइंट्स पढ़ा था अगर वो याद रहेगा तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा. The Act provided for an all India federation. It's the correct answer. Residual subjects were allocated to provincial legislators. It marked the beginning of provincial autonomy. It abolished the hierarchy at the provincial level and introduced it at the central. So according to the question, B जो है that is not the features. अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि रेसिडुअल पावर्स था वो गवर्नर जनरल के पास था. Residuary subjects were neither allocated to the center nor provincial legislature. Residual power were vested in the Governor General of India. Thus, these are not a salient features. So, Government of India 1935 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आता ही आता है मोस्टली. सो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे. वैसे सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से ही देखना है. Why is the Government of India Act 1935 important? जो मैं बोल रहा था तभी से ये उस क्वेश्चन का इधर आंसर है. It is the main source of the Constitution of India. It gave independence to India. It envisages partition of India. It abolished the native states. So you can also answer the
Option A will be the correct answer. The Government of India Act 1935 is an important source for the Constitution of India. Many provisions of Indian constitutional and federal government hierarchy at the center, distribution of power between center and state, and establishment of a federal court have been taken from it. Our next question: Which one of the following acts led to the separation of Burma from India? पहले भी देखा था Government of India Act 1935 that led to the separation of Burma from India in 1937. Burma was separated from India according to the provisions of Government of India Act 1935. बट 37 में भारत से अलग हुआ था. Next question: In how many provinces was the Congress Ministry formed in the election for the year 1937? ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Provincial elections were held in British India in 1936-37 as mandated by the Government of India Act 1935. The elections were held in 11 provinces. कहाँ हुआ था? मद्रास, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP, Bengal, Punjab and Sindh. The Congress Ministry was formed in 8 provinces out of 11 in the election in 1937. So 11 में से 8 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और कांग्रेस मिनिस्ट्री वहाँ पे बना पाई थी. तो ऑप्शंस में से नहीं है. सो now moving on to the next question, number 27. The proposal for framing of the Constitution of India by the unelected Constitutional Assembly was made by Simon Commission, Government of India 1935, Cripps Mission, British Cabinet Mission. So इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी. The proposal for framing of the Constitution of India after the end of Second World War by an elected Constitutional Assembly was made by Cripps Mission. Cripps Mission 1942 में आया था. ये मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पे ये पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. The objective of Ilbert Bill in reference to the colonial rule in India was to bring Indians and Europeans at equal status as far as the penal jurisdiction of court was concerned, to put a strict restriction on local press because they were considered anti to colonial rulers. Option C, to conduct administrative service exams in India to encourage Indians to participate in, to amend the Arms Act for weapon permit to Indians. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए. और इल्बर्ट बिल का काफ़ी विरोध हुआ था यूरोपियंस के द्वारा, क्योंकि इसमें इंडियंस और यूरोपियंस को साथ इक्वालिटी देने की बात कही गई थी. The Ilbert Bill was introduced in 1883 by the British India by Viceroy Ripon, who proposed an amendment to existing laws in the country at the time to allow Indian judges and magistrates jurisdiction to try British offenders and criminal cases to something which was not allowed at that time. मतलब उनके मन में था कि इंडियन जज कैसे ब्रिटिशर्स को ट्रायल कर सकता है. लॉर्ड रिपन का काफ़ी विरोध भी हुआ था इस एक्ट का. और लॉर्ड रिपन जो थे उन्होंने भारत के फेवर में कुछ फैसले लिए थे, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, उसको भी रिपील करने वाले लॉर्ड रिपन ही थे. आगे देखेंगे हिस्ट्री में. Now moving on to the next question. As per the cabinet mission plan in the Constituent Assembly to decide allotted member seat in each province, one representative was in the ratio to which population? 8 lakh, 10 lakh, 12 lakh, 15 lakh. तो ऑप्शन विल बी बी 10 लाख. हर 10 लाख के ऊपर में एक रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में रहना चाहिए था, ऐसा डिसाइड हुआ था. The cabinet mission arrived in India in 1946. The mission proposed a plan for the formation of Constituent Assembly to frame a constitution for the Indian Union. The representative provinces were based on the population, roughly one representative over 10 lakh population.
Whom the following person was not a member of the कैबिनेट मिशन प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद 67th BPSC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। विलियम वुड, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, बी अलेक्जेंडर। सो विलियम वुड इज़ नॉट द पर्सन हु वाज एसोसिएटेड विद कैबिनेट मिशन। इसमें पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टैफर्ड क्रिप्स थे, बी अलेक्जेंडर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो, ऑप्शन ए 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन 1942, क्रिप्स मिशन 1946 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर कैबिनेट मिशन 1946। सेम यहाँ पे लिखा है, यू कैन गो थ्रू इट। In the interim government formed in 1946, the vice president of the executive council was Jawaharlal Nehru, Dr. S. Radhakrishnan, C. Rajagopalachari, Dr. Rajendra Prasad. So correct answer is Jawaharlal Nehru. On 24th August 1946, interim government was announced on the condition that interim government would take charge latest by 2nd September 1946. Viceroy was the president of the executive council, while Jawaharlal Nehru was designated as the vice president of the executive council. तो जो वाइसरॉय थे वो प्रेसिडेंट थे और जवाहरलाल नेहरू जी को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया था। We have done up to question number 32. I think we have missed one page here. We'll directly jump to question number 47. So okay, no issue. For today we will be summing up and here only question number 32. In the next video we will go again from question number 33. Actually my plan was to up to question number 50, but I think I missed a page here, D14. So we will end the video here only, and please like and subscribe my channel and go through the video and share to your friends as much as you can. So for now it's over from me. Have a good day. Bye bye. Jai Hind.